Dear learners, I welcome you all in this session where today we are going to discuss about health insurance features and its significance. I am Dr. Sunil Kadyan, Associate Professor with Department of Finance, Insurance and Risk Management at Birla Institute of Management Technology, BIMTech, Greater Noida, UP. So after watching this session, you will be able to discuss health insurance and explain the classification of health insurance products, and will discuss the features of and significance of mediclaim policy. हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को हम लोग मेडिक्लेम पॉलिसी भी कहते हैं. इस सत्र के बाद हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, साथ में उसके जो वर्गीकरण है, उसका क्लासिफिकेशन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, उसके बारे में चर्चा करेंगे. उसके साथ के साथ जो भी हम उसके फीचर्स को पढ़ेंगे, उसका क्या क्या महत्व है. अगर आप किसी को कोई पॉलिसी सजेस्ट करते हैं या आप कोई ख़रीदते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का मुख्यतः अपने जहन में रखनी होंगी बातें, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. और अभी इंडस्ट्री में कौन कौन से फीचर्स ऐसे प्रचलित हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे. सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस. सो हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ टाइप ऑफ अ इंश्योरेंस कवरेज that cover the cost of an insured individual medical and surgical expenses. If we talk about from the contract point of view, it's a contract between two parties. In insurance, we have two parties. One is a policy holder, we also call insured, and the another party is insurance company, we also call insurer. That requires the health insurer to pay the insured healthcare cost in exchange of insurance premium. So when they are entering into contract, both the parties, here the policy holder need to pay the premium timely. On the other side, the health insurance company, with the terms and condition of that policy within the time frame, if the policy that peril or cause of loss is payable, that is healthcare cost, they are going to indemnify the insured, or in simple terms you can say policy holder. It prevents you and your family from suffering a financial loss as a result of accident, illness or disability. So if you require hospitalization, it can be due to reason like you met with an accident, or your family who is insured, or some illness or disease comes, or due to some accident that is disability take place. So in these circumstances, the insurance company is going to pay you, or in other form we can say that the financial losses which will incur in this, they are going to help you out. इसी में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में 55 से 62 मिलियन व्यक्ति हर साल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के कारण बिलो पॉवर्टी लाइन में चले आते हैं. ये वो व्यक्ति हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं है, और ये अनएक्सपेक्टेड होता है. हमें पहले से नहीं पता होता कि एक्सीडेंट होने वाला है, या कोई डिजीज़ या कोई ऑपरेशन की आवश्यकता होगी. कितना ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो सकता है, उसके बारे में भी हम लोग पहले नहीं सोच सकते हैं. उसके लिए हम एक प्रबंध कर सकते हैं, उसके लिए हम एक पॉलिसी ले सकते हैं जिसको हम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कहते हैं. एक और आंकड़ा कहता है कि इस समय सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन अगर हम देखेंगे हेल्थ केयर सेक्टर में, इस समय 14% की दर से महंगाई दर, जिसे हम इन्फ्लेशन रेट कहते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है. सो यू कैन से दैट फॉर द कैलकुलेशन पर्पस द फाइनेंशियल इंडस्ट्री assume the 7% inflation rate, but see in healthcare you are having 14% inflation rate. You can just imagine at what rate it is increasing year after year. So it's very important for each one of us that we should have a health insurance plan, and that too with the adequate sum insured, keeping inflation in mind. Now let's take a small example where there is an illustration in front of you wherein there is a person who is having a 6 lakh per annum salary package, and the age is 25 years. Now this person requires a health insurance plan for himself for 5 lakh sum insured. What would be the annual premium? Right. So it's a simple question wherein we have just assumed that there is a person having a 6 lakh per annum package and having a 25 years currently today, as on today, and would like to have a health insurance plan for 5 lakh sum insured. We also call, in Hindi we call Bimit Rashi, that is 5 lakh rupees per year.
सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसका सालाना प्रीमियम क्या होगा। आजकल आप देखते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इवन मंथली पेमेंट का भी प्रावधान रखते हैं ताकि आप एक अच्छी सम इंश्योर्ड की हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सकें और उसका प्रीमियम का भुगतान कर सकें। तो इसके अभी काफ़ी लोग उत्सुक होंगे कि इसमें कितना प्रीमियम इसका रहेगा। तो कैलकुलेशन पर्पज से मैंने इसको इजी बनाने के लिए इसका जो हमने काफ़ी प्लान्स देखे डिफरेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के, नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ के, तो ये जो प्रीमियम आता है वो आता है 583 rupees per month. Many of you might be astonished because many times the youngsters, especially when they have started earning, they will purchase n number of things, but they will not have a life insurance and say health insurance plan. Just see the premium, 582 rupees come out to be somewhere around 7,000 rupees per year. So that's why sometimes we are not aware. So we should know that premium is not at the very higher side. When you are young, please take it because your health, you will not have a adverse health condition with you at the younger age. As the age advances, mortality and morbidity, both the things increases. So we'll start with a brief history of health insurance, especially in India. As you all know that nationalization of life insurance took place in 1956, that is LIC was formed, life insurance company, still a big giant in life insurance industry. When we talk about nationalization of general insurance industry, also called non-life one, it was in 1982, right? Now see what happened, that in Mediclaim insurance policy, when it was launched in November 1986. So you can see that even after nationalization, this was just another product in general insurance industry. Even after 1972, when the nationalization take place in general insurance, so it took almost say 14 years to pick up. And when the first health insurance plan was being launched, it was not a cashless one. So this plan was first launched in India in November 1986 by all the 4 PSU companies which are still working in our country, say New India United, New India Assurance, Oriental Insurance is there. So that was started by them. Now following the recommendation of Malhotra committee, that is a report in 1999, the IRDA was constituted as the autonomous body to regulate and develop the insurance industry. इसके पश्चात जब भारत सरकार ने मल्होत्रा कमेटी का गठन किया, उस समय ये चर्चा थी कि क्या इस समय हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, बीमा क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर्स को हम लोग बुला सकते हैं क्या। इसकी रिकमेंडेशन मल्होत्रा कमेटी ने पुरजोर से की कि ये सही समय है जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को हम लोग बीमा क्षेत्र में उनकी एंट्री करा सकते हैं। इसी के फलस्वरूप आप देख सकते हैं कि 1999 में IRDA का गठन हुआ। IRDA की फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, आजकल हम इसे IRDA कहते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका गठन हुआ सन 2000 से इसने काम शुरू किया और द मेन इट इज़ एन ऑटोनमस बॉडी विच रेगुलेट एंड डेवलप द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। तो आप कह सकते हैं ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, बहुत ही डायनेमिक और अच्छी रेगुलेटरी बॉडी जो कि बहुत ही प्रयास कर रही है इस समय to protect the interest of policyholder and to develop the insurance industry in India. Now the IRDA opened up the market in 2000 for private players, followed by a FDI, that is foreign direct investment. Initially it started with 26% in 2000 and then it was enhanced to 49% in 2015. जब शुरू हुआ प्राइवेट प्लेयर्स का आना बीमा क्षेत्र में सन 2000 में, जैसी IRDA का गठन हुआ, उस समय FDI की लिमिट भारत सरकार ने 26% के साथ शुरुआत की। उसके पश्चात 2015 में ये बढ़ा के 49% कर दी गई। FDI इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। व्हाट डज इट मीन? फॉरेन प्लेयर्स भी इंडिया में आके साझेदारी में भारतीय बीमा कंपनी के साथ मिलके एक इंश्योरेंस कंपनी को खोल सकते हैं। उसमें उनकी जो भागीदारी थी FDI 26% जो बढ़ा के 49% कर दी गई 2015 में। इसके पश्चात अगर हम देखें 2021 में ये बढ़ा के 74% कर दी गई। सो FDI लिमिट वाज enhanced to 74% in insurance industry and in insurance industry it was been enhanced to 100%.
अगर हम करंट स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो सन 2025 में भारत सरकार ने ये जो सीमा एफडीआई की है यह पूरी 100% कर दी गई है, जो कि बहुत अच्छा साहसिक और अच्छा कदम है भारत सरकार के द्वारा, जिससे बीमा क्षेत्र काफ़ी आगे बढ़ेगा और बहुत सारा एक्सपीरियंस जो है फॉरेन पार्टनर्स जब भारत में आएंगे तो अपने साथ बहुत अच्छी गुड प्रैक्टिसेस लेके आएंगे, जो कि बीमा क्षेत्र के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। अगर हम बात करें इस समय कितनी इंश्योरेंस कंपनी काम कर रही हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भारत में, तो अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है और 23 प्राइवेट सेक्टर हैं, जो कि टोटल 24 कंपनीज़ हैं जो जीवन बीमा में काम कर रही हैं। अगर हम नॉन लाइफ की बात करें, जनरल इंश्योरेंस की बात करें, तो पब्लिक सेक्टर में 6 हैं, जिनमें से 2 स्पेशलाइज हैं जिसे हम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस भी कहते हैं, और एक और कंपनी है जो कि स्पेशलाइज कैटेगरी में आती है। 21 प्राइवेट प्लेयर हैं जो कि 27 बनाते हैं टोटल जनरल या नॉन लाइफ में। स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इस समय भारत में 4 स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी काम कर रही हैं। री इंश्योरेंस की बात करें जिसमें फॉरेन री इंश्योरेंस ब्रांचेस और लॉयड्स इंडिया की मिलाएं तो एक हमारे एकमात्र पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसे हम जीआईसी री कहते हैं, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। प्राइवेट सेक्टर में देखें तो 11 ऑफिसेस कंपनीज़ ने अपने ओपन अप किए हैं भारत में। तो अगर री इंश्योरेंस की बात करें तो वहाँ 12 आती हैं। टोटल जो सोर्स है आईआरडीआई की एनुअल रिपोर्ट से लिया गया है, जिसमें 8 पब्लिक सेक्टर और 62 प्राइवेट सेक्टर, टोटल 70 इंश्योरेंस कंपनियां जो इस समय भारत में बीमा क्षेत्र में काम कर रही हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, नाउ in the previous slide you have seen that there are 7 standalone health insurance company. So these are the specialized health insurance companies which are operating in our country specifically in health insurance. So when they would like to open up the insurance company, that is standalone health insurance company, the same eligibility criteria is there, but you know that there is a lot of scope in India when it comes to health insurance because there is a lot of untapped market in India. So these specialized standalone health insurance companies are working. So these are the names: Star Health and Allied Insurance. Then we have Niva Bupa Health. Previously it used to be Max Bupa Health Insurance Company, but right now it's Niva Bupa Health. Then we have Care Health Insurance Company. Previously the name was Religare Health Insurance Company. Then we have Manipal Cigna Health Insurance Company. Previously it used to be Cigna TTK Health Insurance Company. Then we have Aditya Birla Health. Then 2 new companies have come, that is Galaxy Health and Allied Insurance Company and Narayana Health Insurance Limited. So they have taken a new license through IRDAI to operate in 2024-25. So these are the 7 standalone health insurance companies. Specifically I have mentioned the previous name of these current standalone health insurance companies because the learner should know that what was the previous name or who was the previous promoter in the standalone health insurance category. Now if we see the segment wise share in premium of general and health insurance as per the IRDAI annual report 2023-24, as you can see the number 1 in a non-life sector, we call it general insurance industry sector, you will find that health insurance is the number 1, having say 40% of share of the premium which has been collected in 2023-24. Second is 31.68, that is motor insurance, followed by 7% fire, then marine and other type of non-life portfolio is there. So this is a very good we can say the premium collection in case of health insurance, because after COVID consistently if you see the collection of premium in non-life industry, the health insurance segment comes number first. But since inception you can say that the motor insurance is always number 1 in terms of collection of premium, because we know that every year a lot of vehicles are being purchased and already we have a lot of vehicles which are plying on Indian road, and we know that it's a mandatory, especially the third party. But after COVID this health insurance policy became a instead of push product it became pull product. People were coming and inquiring through insurance company, insurance intermediary, that we would like to have this plan. So resulting into this, you can just see in front of you
that this year also the health insurance premium in non-life segment is number one. This shows that it's really a very promising sector when it comes to insurance, and that's why we have 7 standalone health insurance company and many non-life one also are focusing on health segment. If we talk about the classification of health insurance product, so broadly it is classified into 3. One is indemnity plan. So bulk of the health insurance plan you see in the Indian market are indemnity based. Another is fixed benefit, hospital cash or fixed sum is the example, and third one is critical illness, we call it fixed benefit plan. Now what does indemnity means? Where we say that bulk of health insurance market is of indemnity base. Indemnity means that the product generally which we purchase from the retail product which we purchase, where you very well know that if you have taken a 5 lakh sum insured policy and the claim come out to be healthcare expenses come out to be say 2 lakh rupees, so you will be given only 2 lakh rupees. So whatever actually the healthcare expenses has been cut, you are entitled to get that only as a insured, not full sum insured. So that's why we called it indemnity. When we talk about fixed benefit, there are some specific say features in the health insurance plan, where if you have taken a specific health insurance policy which says hospital cash is a provision in that, say 500 rupees per day. So whenever a policyholder is admitted in the hospital, they are entitled to get that 500 rupees. I'm just taking an example wherein you will get 500 rupees per day and there can be maximum limit to it. So it's a big fixed sum which you know since inception when you have taken a policy, which has nothing to do with indemnity. Third one is critical illness. There are a lot of big diseases, dreaded disease which we are very afraid of, and mortality is also higher. In that case, if that is diagnosed after some time period, the full sum insured is being paid to the policyholder if alive. If not alive, then in that case the full sum insured is given to the nominee. So that's why we called it fixed benefit plan, and the best example is critical illness policy. Another classification of health insurance plan can be on the basis of customer segment. On the type of a customer segment which you are catering to, we can have 3 type of plans. One is individual cover, another is group cover, third is a mass policies. Let's explain them. What does it mean? So whatever products you are able to see in the Indian market for the retail customer and their family member is an individual cover. So you can purchase it as a individual cover, you can purchase it as a family floater, right? Predetermined terms conditions are there. At the same time, already the premium has been pre-decided. So you cannot say alter the terms and condition. Second one is called group cover. Now group cover is also very popularly known as group mediclaim cover, GMC policies. So the corporate clients covering employees is the best example. Say you are working in a company, your employer might have taken a group mediclaim cover or group cover for you. In this, premium is less, coverage is more, right? And the moment you leave the group, you are not covered in that. And generally this happens. Third is mass policies. It's a government sponsored scheme, right? The best example for this mass policies can be say RSBI plan are there. Then after that, after this, the another plan came which is very popular right now in our country, that is Ayushman Bharat. Now Ayushman Bharat covering, you are able to see that consistently after some time period, the coverage for different segments, it has been enhanced. So sometime you will find that some specific state government is having their own health insurance plan for their the population of that particular state. Sometime it's a central government is sponsored, sometime it is in partnership, but for the masses. That's why we called it mass policies, right? So we can say government social security schemes also come under the preview of this. Now if we go as a type of health insurance plan, so we can have the individual plans, we have family floater plans, then critical illness plan, disease specific plan also we have, which are very popularly in India and different parts of the country. At the same time, we have group mediclaim cover, we call group insurance business. We also have senior citizen plan, specifically those people who are more than 60 years of age. So these are the main plans when you see
in health insurance industry, you will find these type of plans. So big question comes, many times the learners or a common citizen, they might be asking that which plan to go. Shall we go with the individual policy plan, or we should go with the health insurance family floater plan? Now there is a difference between both of them. Say for example, you are the only one who would like to have a health insurance plan, so you can straight away can take a individual policy of any health insurance company. Now in that case, with your age some premium will be quoted, and through that you can take a plan, plus it's a GST 18%, and the final premium comes. It's very easy. Premium calculator are there, online, offline, they are available. Your agents are going to help you out. But when it comes to a family, right? Say for example, in this say pic on the slide, you can see that 2 adult and 2 children are there. Now in family floater plans, you have a different type of charts as per the family group. Say 2 adult, 0 child if they don't have any child, then 2 adult 1 child, 2 adult 2 child. So for these specific premium is quoted for that full family. The premium is decided on the eldest member of that family. So husband or wife, anyone who is at the older age as compared to the spouse, on that basis the premium is calculated. So say 2 adult, 2 child, 5 lakh sum insured plan, there is a specific premium. Now what happened? These days insurance companies are saying that the family also can have an individual plan, wherein the individuals having separate sum insured. Say for example, this family is having 5 lakh family floater plan, and someone approached them that please take an individual plan where each member is having 2 lakh sum insured each. So the person will think that I'm insured for 8 lakh rupees and premium is comparatively slightly lower. But this is not the case, because in individual plan, say for example, child get ill and the sum insured or healthcare expenses exceed 2 lakh rupees. Now they cannot take even a single rupee of the other family member if they have an individual sum insured. So my suggestion to you is that whenever you have a family, please go with the family floater plan, because any one of them, 2 of them, 3 or all collective 4 of them can avail up to 5 lakh sum insured healthcare expenses in a year. So that's the beauty of the family floater plan. But if you have a senior citizen in your family, it's better to have a separate senior citizen policy for them, because the premium in family floater is being determined on the eldest member of that family. Now we are going for a short break. We'll join you back. प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने हम अपना दीपक स्वयं बने हम अपना रास्ता स्वयं चुने अपना दीपक स्वयं बने हम अपना रास्ता
जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोट से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोट से युक्त हो। मित्रों हम पढ़े और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने हम। अपना दीपक स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बात, कोई मन चाहा केंद्र चुने हम। अपना दीपक स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने Dear learners, I welcome you after the short break. In the previous, just before that break, we were discussing about individual and family filter. Now moving ahead, we'll talk about some important terminology which generally the salesperson and agent doesn't discuss. Sometimes they intentionally would not like to discuss with you because they restrict your benefit. The first one is pre-existing disease. Now what does it mean? Any condition, ailment or injury or related conditions for which you have a sign or symptoms and or were diagnosed and or received medical advice, treatment within 48 months to prior to the first policy issued by the insurance company. Now it sounds to be very technical to you, right? Now generally this maximum waiting period for pre-existing disease, in short we call it PED, is 4 years. Let's explain it in a very simple terms. जब भी आप कभी कोई नया हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो वहाँ पे आप एक प्रपोजल फॉर्म भरते हैं. उस प्रपोजल फॉर्म में कुछ प्रश्न होते हैं कि पहले कभी आपकी कोई सर्जरी हुई है, कोई डिजीज़ डायग्नोसिस जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, उसकी कोई दवाई ले रहे हैं या कोई सर्जरी आपकी हुई है, वो सब मेंशन उसमें करना होता है. इस पे कई बार क्या होता है कि एजेंट जो है प्रपोजल फॉर्म को फिल करता है,
और एक पॉलिसी होल्डर कस्टमर कभी भी ब्रोशर नहीं पढ़ता है, उसकी टर्म्स कंडीशन नहीं पढ़ता है और सिंपली इस पर साइन कर देता है। इसमें कई बार ये होता है कि मान लीजिए कल क्लेम होता है और आपने इसमें नो करके भेज दिया, जबकि आपकी कोई प्री मेडिकल कंडीशन थी, सर्जरी थी, और जब आप एडमिट होते हैं मान लीजिए नेटवर्क हॉस्पिटल या नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में, वहाँ पे आप स्वयं बताते हैं कि आपको 4 साल से 3 साल से कोई बीमारी है, उसकी आप मेडिसिन ले रहे हैं या कोई सर्जरी हुई थी, उस स्थिति में आपका क्लेम डिनाई हो सकता है। इसीलिए एज अ कस्टमर हमारी ड्यूटी होती है कि हम उस ब्रोशर को, टर्म्स कंडीशंस को पढ़ें, तुरंत हम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ना खरीदें। अगर आपको कोई टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती, स्पेशली लाइक प्री एक्सिस्टिंग डिजीज़ क्लॉज, अपने एजेंट या सेल्स पर्सन से पूछें उसके बारे में, क्योंकि बाद में आप ही का क्लेम इस वजह से डिनाई हो सकता है। इसलिए प्रपोजल फॉर्म में स्वयं भरना चाहिए। अगर आप स्वयं नहीं भरते, आपका एजेंट भरता है, तो आप उसके साथ बैठिए और जितनी भी आपकी कोई भी प्री मेडिकल कंडीशन है या कोई भी प्रश्न पूछा गया आपका प्रपोजल फॉर्म के माध्यम से, उसको आप अच्छी तरह भरें और हमेशा सच बोलें। क्योंकि अगर आप कोई प्री एक्सिस्टिंग डिजीज़ का उल्लेख करते हैं अपने प्रपोजल फॉर्म में, ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में आपका प्रपोजल फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आपका प्रीमियम रिफंड हो जाएगा, या कंपनी चाहेगी उसको एक्सेप्ट करना, तो हो सकता है अगर थोड़ा सा मेडिकल हैज़ार्ड ज़्यादा होगा तो आपसे अतिरिक्त प्रीमियम चार्ज किया जाएगा, एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज किया जाएगा, जिसको हम इंश्योरेंस की भाषा में लोडिंग कहते हैं, एक्स्ट्रा रिस्क विद एक्स्ट्रा प्रीमियम। और अगर वो प्री एक्सिस्टिंग डिजीज़ क्लॉज में आता है तो उस बीमारी से रिलेटेड अगर आपका क्लेम आता है अगले 4 सालों में, तो वो पे नहीं किया जाता। अब यहाँ पे हमने अभी जाना कि एक प्री एक्सिस्टिंग डिजीज़ क्लॉज क्या होता है। अब अगर हम कहीं किसी भी कंपनी का अगर ये प्लान खरीदते हैं या हम किसी को सजेस्ट करते हैं, तो हमें जहन में कौन सी चीज़ें रखनी होगी। पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये सब सच्चाई के साथ प्रपोजल फॉर्म में इसका उल्लेख करना चाहिए। दूसरा, अगर कोई कंपनी प्री एक्सिस्टिंग डिजीज़ क्लॉज 4 साल की बजाय अगर 3 साल का अगर आपको प्री एक्सिस्टिंग डिजीज़ क्लॉज कहता है, अगर ये फीचर है उस वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो आपको उस इंश्योरेंस कंपनी के हेल्थ प्लान के साथ जाना चाहिए। दूसरी टर्मिनोलॉजी है वेटिंग पीरियड। ये भी हमने देखने को मिला है कि कई बार इसकी चर्चा नहीं की जाती, लेकिन ये सभी कंपनीज में वेटिंग पीरियड पाया जाता है। इस वेटिंग पीरियड का तात्पर्य क्या है या किस रूप में ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में होती है। पहला है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, वेटिंग पीरियड कैन बी ऑफ 1 year, 2 years, 3 years और मैक्सिमम 4 years अप्लाई फॉर द डिजीज लाइक कैटरेक्ट, हर्निया, कैलकुलस। There is a 30 days initial waiting period from inception of the policy, or we also called it cooling off period. This, however, will not be applied for hospitalization due to accident. अब इसको हम साधारण भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि आपने पहली बार कोई नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, पहली बार, तो सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है, जिसे हम कूलिंग ऑफ पीरियड भी कहते हैं। इसका तात्पर्य है, अगर आपने कोई नई पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से, शुरू के 30 दिन में अगर क्लेम अराइज होता है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड 30 डेज वेटिंग पीरियड होता है। इसका एक्सेप्शन है सभी कंपनीज में है ये कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, एक्सीडेंट होता है, ये डे 1 से कवर होता है, इवन इन अ न्यू हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। साथ में जो मुख्य बात है वो ये है कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक डिजीज़ या इलनेस होती हैं जिसमें देखा गया है कि वो 1 साल तक पॉलिसी लेने के या 2, 3 या 4 साल तक वो कवर नहीं होती हैं। अब हमें इसके बारे में पता नहीं होता और हम इस टर्म्स कंडीशन पढ़ते भी नहीं है, साथ में ब्रोशर भी नहीं पढ़ते, प्रपोजल फॉर्म भी नहीं, और साथ के साथ जब पॉलिसी इशू हो जाती है तब भी हम इसको नहीं पढ़ते, क्योंकि वो लिखित में ये सब चीज़ें देते हैं। इसमें क्या होता है, कई बार आपके डिजीज़ डायग्नोज हुई और स्ट्रेट अवे वो क्लेम डिनाई हो जाएगा, क्योंकि वो हो सकता है 1, 2 या 3, 4 साल के वेटिंग पीरियड में आते हों। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें वो टर्म्स कंडीशन पढ़ें कि कौन सी बीमारी को वो 1 साल, 2 साल, 3 या 4 साल में कवर नहीं करते हैं। अब अगर हम बात करें कि अगर हम कोई हेल्थ प्लान लेते हैं या किसी को सजेस्ट करते हैं एज अ एक्सपर्ट, वहाँ पे हमें कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। मैंने कुछ कंपनीज़ का देखा है जहाँ पे वो सिंपली कहते हैं हमारी कंपनी में जो वेटिंग पीरियड है डिजीज स्पेसिफिक वो मैक्सिमम 2 साल का ही है, प्लस नंबर ऑफ इलनेस भी 14 या 15 ही है। कुछ कंपनीज़ के प्लान होंगे, अगर आप उसके टर्म्स कंडीशन पढ़ने बैठ जाएंगे तो हो सकता है पहले साल से लेकर चौथे साल तक अगर आप टोटल करेंगे तो हो सकता है कि 40-45 ऐसे डिजीज़ होंगी जो कवर कभी ना कभी 1, 2, 3 या 4 साल में कवर नहीं करते हैं।
ये बहुत ही पेक्यूलियर सिचुएशन है, क्योंकि अगर कोई दूसरी कंपनी कहती है कि हम तो मैक्सिमम 2 ईयर्स का ही वेटिंग पीरियड रखते हैं और सिर्फ 14 इलनेस है जिसको हम कवर नहीं करते, तो आप स्वयं ही इसका निर्णय ले सकते हैं कि कौन सी कंपनी का प्लान लेने में ज़्यादा फ़ायदा है। जहाँ पे वेटिंग पीरियड कम हो और नंबर ऑफ़ इलनेस भी वेटिंग पीरियड में कम आती हो, वही प्लान हम लोगों को लेना चाहिए। बहुत ईजिली आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे डिफरेंट प्लान को कंपैरिजन करने के भी फीचर्स आते हैं, वहाँ भी आप इसको इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा जो है, बहुत सारी लिमिट सब लिमिट भी होती है जिनकी चर्चा नहीं की जाती। मैंने देखा है कि कई व्यक्तियों का ये रहता है कि हमें कोई ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चाहिए जो सबसे सस्ता हो। जब आप सस्ते की बात करते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वेटिंग पीरियड भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ इलनेस भी ज़्यादा है, वहाँ पे लिमिट सब लिमिट भी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आपका कोई लिमिट हो, डिजीज़ स्पेसिफिक भी सम इंश्योर्ड हो सकती है, को पेमेंट हो सकता है। तो इन सब की जानकारियाँ हमें पहले से जाननी होंगी एज अ रिस्पॉन्सिबल कस्टमर। मुख्यतः हमने देखा कुछ प्लान्स में स्पेसिफिकली 1% ऑफ सम इंश्योर्ड का क्लॉज रहता है रूम रेंट का हॉस्पिटल में, और अगर 1% सम इंश्योर्ड का रूम रेंट का लिमिट होता है तो आईसीयू चार्जेस में जनरली वो 2% ऑफ सम इंश्योर्ड होता है। एग्जाम्पल आपका हो सकता है कि एजेंट या मैनेजर कहते हैं कि हर चीज़ के लिए कवर्ड है, डे 1 से कवर है, और साथ में ये भी कहते हैं कि आप कोई भी रूम ले लीजिए किसी कैटेगरी का, उस स्थिति में आप 100% आपको जो है क्लेम मिल जाएगा ना। इसमें हमें जानने का प्रयास करना होगा कि ऐसा नहीं है। ऐसी कोई प्लान नहीं जहाँ पे वेटिंग पीरियड ना हो, ऐसा कोई प्लान नहीं जहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन किसी न किसी रूप में हो। तो कहने का मतलब, अगर लिमिट 1% की सम इंश्योर्ड की है तो आईसीयू चार्जेस की ये 2% की रहती है। तो अगर मान लीजिए आपने 5 लाख का सम इंश्योर्ड लिया है तो 1% रूम रेंट होगा 5000 पर डे, और आप चले गए ऐसे अस्पताल में जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है रूम रेंट, मान लीजिए 10,000 15,000, तो ऐसी स्थिति में आप सिर्फ 5,000 के लिए इंटाइटल्ड हैं, और अगर 10,000 का रूम हुआ तो 5,000 रुपये प्रतिदिन आप अपनी जेब से उसका पे करेंगे। इसलिए एडुकेट सम इंश्योर्ड लीजिए। साथ में जनरली आजकल बहुत सारी कंपनीज़ के बहुत सारे प्लान्स हैं जहाँ पे इस प्रकार की कोई भी लिमिट सब लिमिट नहीं है, तो आपको वही प्लान सजेस्ट करने या ख़रीदने हैं जहाँ पे इस प्रकार के रूम रेंट आईसीयू चार्जेस की लिमिट सब लिमिट नहीं हो, और अगर आप कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा प्रीमियम आपको डिफरेंस भी प्राप्त नहीं होगा। साथ में भी देखने को मिला कि कुछ कंपनीज़ के प्लान्स होते हैं जहाँ पे वो सिंपली लिख देते हैं इस डिजीज़ का हम इतना ही पे करेंगे, ये भी एक तरह से लिमिट होती है। तो मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि आप उन प्लान्स का चुनाव करें जहाँ पर डिजीज स्पेसिफिक कोई कैपिंग ना हो, कोई रूम रेंट की आईसीयू चार्जेस की नहीं हो, जितना सम इंश्योर्ड आप उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब उसकी बात अगर हम बात करें कि जो ग्रेस पीरियड की फ्री लुक पीरियड जिसे हम कहते हैं, एक फीचर होता है। फ्री लुक पीरियड का मतलब होता है, मान लीजिए कि आपके एजेंट या सेल्स मैनेजर ने कुछ आपको ऐसे प्लान बताया जिसमें फ़ायदे उसने जो बताए, जब एक्चुअली में आपके पास पॉलिसी आई तो वहाँ पे देखा गया कि वो सारे फीचर्स उसमें नहीं है, या आपका मन चेंज हो जाता है बाद में कि इस प्लान को लेके ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, तो आप 15 दिन, आजकल ये 30 डेज़ है, जब आपको पॉलिसी प्राप्त हो जाती है उसके 30 डेज़ के अंदर आप उसके टर्म्स कंडीशन पढ़ लीजिए, बेनिफिट्स पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो नहीं है या आप संतुष्ट नहीं है तो आप चाहे तो उस पॉलिसी को वापस कर सकते हैं, आपको प्रीमियम थोड़ा सा उसको डिडक्ट करके वापस आपको दे दिया जाएगा। एक और फीचर है जिसे हम कम्युनिटी बोनस कहते हैं। जिस प्रकार से मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर आपका क्लेम फ्री ईयर होता है तो एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल आपको डिस्काउंट इन प्रीमियम दे दिया जाता है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में ज़्यादातर अगर आपका क्लेम फ्री ईयर होता है तो आपको कम्युनिटी बोनस उसे नो क्लेम बोनस ना कह के उसे कम्युनिटी बोनस कहते हैं, जहाँ पे आपका सम इंश्योर्ड एक अनुपात में 1% से बढ़ जाता है सेम प्रीमियम पे, इसको हम कम्युनिटी बोनस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, enhancement of insured sum insured in form of cumulative bonus varies from 5 to 50% every claim free year. So if you have not taken any claim this year, now next year when you will pay the renewal premium, your sum insured will be enhanced by some percentage. It may vary from 5 to 50%, but these days I have seen many plans wherein if you have not taken any claim, then the very next year it will enhance by 50%. And in very next year again 50%, so it will become double. For example, today you have taken a 10 lakh sum insured health insurance policy. If you have not taken a claim, then in the very next year
the sum insured will be enhanced to 15 lakhs. Again, it's a claim free. Next year, it became 20 lakhs. But in no circumstances it's going to go beyond double. But today, there are some company whose plan says that if you are not taking a claim, so your sum insured, that cumulative bonus, can enhance up to 5 times or say 10 times of the basic sum insured, and the premium will not be enhanced also. So this is the innovation which is there in cumulative bonus. So my suggestion, उन कंपनीज का चुनाव करना चाहिए जहाँ पे कम्युलेटिव बोनस सबसे ज़्यादा आपको दिया जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति कहता है इतने साल से उनने कोई क्लेम नहीं लिया, इसका क्या बेनिफिट, उनको क्या मिला. तो जनरली आप जा सकते हैं, 50% सम इंश्योर्ड बढ़ जाता है जिसमें 2 साल बाद डबल हो सकता है. लेकिन आजकल कुछ प्लान्स ऐसे हैं जो 5x 10x की भी बात करते हैं, आप चाहें तो उनका भी चुनाव भी कर सकते हैं. देन को पेमेंट, अगेन माई सजेशन टू यू इज दैट प्लीज डोंट गो विद those plans which have a co-payment features. In say senior citizen policy, you have seen this feature. Now if there is no option, then you can go for co-payment of say minimum co-payment when it comes to senior citizen policy, but try your level best that don't opt for these type of plan. What does it mean? Co-payment insurance referred to the in health insurance industry is the percentage of claim amount that has to be borne by the policy holder under health insurance policy. ये भी आप फीचर आप देखेंगे जहाँ पे व्यक्ति ये कहते हैं हमें सबसे सस्ती प्रीमियम वाली पॉलिसी चाहिए, वहाँ पे देखने को मिला है कि को पेमेंट का फीचर होता है. अगर एक स्टेटमेंट आपकी पॉलिसी में है कि इस कंपनी इस हेल्थ प्लान में 10% का को पेमेंट है, इसका मतलब ये है कि जब भी कभी क्लेम आएगा, मान लीजिए 100 रुपये का भी क्लेम आता है, तो उसमें 10 रुपीज़, अगर 10% का है तो 10 रुपीज़ एवरी टाइम यू विल पे योर फ्रॉम योर पॉकेट एज अ पॉलिसी होल्डर. Rest 90% the company will bear the cost. Now this co-payment can be 5%, 10%, it can be up to 40-50% also. So the more the co-payment, less would be the premium. But my suggestion is that go with those plan where the co-payment is less. Right. Now talking about the daycare procedure. Right. Now in health insurance plan, the expert says that you need to get yourself hospitalized at least for 24 hours. Right. Now is there any exception to it? The question arises. The answer is yes. With the development in sciences, medical sciences, we have come across some machines, some procedure where you need not to get yourself hospitalized for 24 hours. Simply what you can do is that you go to the hospital and take a daycare procedure. So, but these daycare procedures are expensive also, right? So in that case, you should see that your health insurance plan have a feature of daycare procedure or not. These days all the health plan have the daycare procedure. The only difference lies is how many daycare procedure they covers. Some says it is 40, some say it's 80, some say 100, but I have come across plan where they are covering more than 150 daycare procedure. My suggestion to you is that go with those plan where maximum number of daycare procedures are there, because this is the beauty of medical science that for every treatment, every diagnosis, we do have a medical terminology. If those companies are giving in writing that we cover more than 150 daycare procedure, it's better to go with them. Some examples are like chemotherapy are there, cataract, tonsillectomy, radiations, lithotripsy. These are the name of the different procedures of medical sciences where you need not to get yourself hospitalized for 24 hours. You go in the morning and by night or late evening you get discharged from the hospital. But these procedures are also covered, we call daycare procedure. With this, we come to the end of this particular session. In this session, we covered what do you mean by health insurance. At the same time, we covered different type of health insurance products, and we also covered some terminologies, especially which are not talked about because they restrict your say benefits. And these are the terminologies which you should understand and try to compare when you are taking a health insurance plan or suggesting someone. So thank you so much for watching this session.